सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम निकल चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। मोटो व्लॉग नहीं है, बस ट्रैवलिंग व्लॉग है। बाकी तो हम जब वहाँ पे पहुँचेंगे तब अभी आगे का बताएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि रोड वोड दिखाना सब कुछ स्किप कर देते और डायरेक्ट व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। अभी हम आए हुए हैं जगदीश। यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और अंदर मम्मा शॉपिंग कर रही है। आप देख सकते हो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे फैमिली बेस है, रहने खाने पीने के लिए। क्या बोला तूने? तो पता नहीं, लेकिन हॉल्ट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे कुछ गो इटरी करके है, साउथ इंडियन स्नैक। सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और यहाँ पे पास ही में एक मॉल भी है। सो अभी आपको सीधा ले चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। 1 2। सो गाइस, वी आर हियर एट द फन सरदार सरोवर रिजॉर्ट और कुछ ही देर में हम लोग निकलने वाले हैं जंगल सफारी के लिए। शायद से वहाँ पे ही डायरेक्ट मिलेंगे। अभी रूम में जाके ये सारा पैकेज वैकेज डाल के क्या बोला तूने? फ्रेश हो जाता हूँ और फिर निकलेंगे जंगल सफारी के लिए। Guys, this is the waiting area. We are at the fun. So guys, अभी हम वेटिंग एरिया पे बैठे हुए हैं। तो पता चला है कि कीज डिस्ट्रीब्यूट होने में थोड़ी देर लगेगी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल आर मोर। सो वेट कर रहे हैं। बाकी तो लॉन्च बहुत बढ़िया है। अभी रूम पे जाएंगे, फटाफट से एडिट करेंगे और आपको नया ब्लॉग देंगे। वैसे कल से बहुत थका हुआ हूँ, पैकिंग वैकिंग किया, सुबह जल्दी उठ गया, नींद आई नहीं, कैमरा खाली किया मैंने, फ़ोन भी खाली किया। और अगर आपको पिक्चर्स वगैरह देखने हैं तो प्लीज़ फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट। मैं लिंक में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में कहीं पे भी दे दूँगा। ओके देन, एंजॉय। अपना रूम नंबर है 3107। 3107 आगे 3107 09 08 07। This is the one. 3107। पहली बार कार्ड वाली की। How to use that? हम गरीब लोग। अच्छा, तुमको उधर हम गरीब लोग कहाँ पे आ गए? झूठ बोल रहा है। 5 स्टार होटल पे। ठीक ठाक वाला व्यू है। तो कोई भी 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार होटल, पूल तो भाई होता ही है। सो दिस इज द पूल एरिया। वैसे कपड़े लाए नहीं है, निकल डाइव वाइव करते शायद अभी से अलाउड तो है नहीं। और ये सारी और होटल्स है। ये यहाँ पे अपना एक रूम है, ये वाला वहाँ पे ही है। दिस इज द रेस्ट ऑफ द प्रीमाइसेस। Sardar Sarovar Resort. I think it is worthwhile staying here. Services are extraordinary.
सो गाइस हियर वी आर जंगल सफारी। पहले हमने डिसाइड किया कि जंगल सफारी कर लेते हैं, फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी चलेंगे और रात को जो लाइट शो होता है वो करेंगे। सो अभी आप लोग ये एंजॉय कीजिए, देखिए अगर मैं सिनेमैटिक्स लेता हूँ, अगर शॉट्स आते हैं उसे भी एंजॉय कीजिए।
so humongous, you can't just imagine. Well, I don't have words to express, but it is worth seeing physically one time. It's amazing. This is literally the queue entering for the gallery art of the gallery, which is situated at the heart of Sardar Vallabhbhai Patel Statue of Unity. And that's the exit. And the entry is at the roundabout to start. So you can just imagine how much grace this is going to take. So here we are on the second floor of Statue of Unity. As you guys can see the dam as well. And here is the Statue of Unity. So guys, the light show is about to start and soon the lasers will project on the Statue of Unity. Saraswati
बेटा था वो दृढ़ता का भंडार। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। So guys, Statue of Unity and the trip is finally over here. I don't know what's the plan for tomorrow. Bye, take care and good night. Don't forget to follow me on Instagram. The ID will be in the description. So guys, we are back from Statue of Unity, way back to Ahmedabad, way back to our home. And guess what, where we are getting our lunch.